First of all, welcome you all to my new YouTube channel, पढ़ाई पे चर्चा. And as per the description, students, you will get all the types of notes, all the types of description of science from class 6 to 10. Also, we will approach to CTET exam preparation in which CDP, English, we will be studying afterwards. Now students, today we will start from chapter 1 of class 6, that is food. Where does it come from? Now, as per the name, listen students, one very important thing whenever we study science, the first thing is we have to consider the topic. First we have to understand actually what the topic means. Okay. In the same way, here the chapter, let me take the pen first. Okay. So here this chapter, food, where does it come from? That means we have to study about food. See, my dear students, food have different sources. One, we can get food from animals, okay, and one we can get food from plants also. So these things are the sources of food. So basically in this chapter, students, we have to study about where does we get food from. Okay. Now proceeding to the chapter, the first thing is food variety. You are seeing here food variety. Now here a word comes ingredients. What does ingredient means? Ingredients का मतलब क्या होता है? The different items from which food is made of. Different items क्या हैं जिनसे हमारा जो भी फूड है वो बना हुआ रहता है. सी, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इन द टर्म ऑफ एग्जाम्पल्स. उसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि अगर आप उस एग्जाम्पल्स को ही अगर अप्रोच करोगे ना, तो वो एग्जाम्पल से आपको आधा कहानी समझ में आ जाएगा. ओके, सो हियर कम्स द फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स. ओके, सी, now we can see that materials that we use to prepare a dish, that are known as ingredients. Okay, now so the basic thing is ingredients. Okay, now when we move further on this chapter, like here example is given of roti and chapati. In English we say chapati. It is made from atta and water, just like dal. What are the ingredients that we use to make dal? Pulses, water, salt, oil, ghee, spices. Okay, so these are the things. Now, food material and sources. As I told previously, there are different sources of food. Like you can see here, the plant source, the source of ingredient, like animal source. Okay, plant sources आप जानते हो, like you are getting rice, you are getting wheat, you are getting maize. Okay, some vegetables like spinach, some many fruits. Here fruits are also shown. In the same way, the different animal sources are, what are the different animal sources? See, milk, egg and meat are the different animal sources. Now proceeding to the chapter, here again a table is there जहाँ पर पूरा एक चार्ट एनसीईआरटी में बताया गया है. These are like idli. What are the ingredients? You can use rice, urad dal, salt, water, and the source is plant, which means that ये जो पूरा सोर्स है ना, आपने देखा राइस का, उड़द दाल का, वाटर का, इसका अकेला का सोर्स क्या है? प्लांट. मीन्स
All these things we get from the plant. Okay. There is nothing we are getting from animal. Water, that is a natural source. ठीक है. Salt we are getting from the oceans and sea water. उड़द दाल plant से ही मिलता है. Rice plant से ही मिलता है. So these are the sources. Now moving further to the chapter chicken curry. You can see chicken curry पसंद भी होगा आप लोगों को. खीर का sources यहाँ पर बताया गया है. Okay. Now moving further to the chapter, like here now this is the very important thing. This is the very important thing. Like plant sources की अगर हम बात करें तो plants are the sources of, see from here students, plant are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetable and fruit. ये सब का source तो plant ही है ना. एनिमल्स जो है वो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, एग्स प्रोवाइड करते हैं, राइट. एंड मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि हम लोग बटर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, राइट. नाउ वन बेसिक थिंग दैट यू हैव टू स्टडी इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर. यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वेट, दिस वन, that is the different part of flower. Here you can see this part, that is flowers. Now flower is the colorful part of the plant. फ्लावर को हम प्लांट का कलरफुल पार्ट बोलते हैं. क्यों? बिकॉज इट वेरीज, है ना. प्लांट टू प्लांट ये वेरीज करता है, कलर अलग अलग होता है. ऑफकोर्स रोज, हिबिस्कस अलग अलग कलर में आते हैं. इतना आप लोगों को पता होगा कि फ्लावर्स जो है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर फ्लावर्स, तो फ्लावर आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट, दैट इज फ्रूट. फ्रूट आर द जूसी पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फ्रूट जो है वो जूसी पार्ट है प्लांट का, जहाँ पर फ्रूट जो है दैट इज आफ्टरवर्ड फ्लावर ना, फ्लावर से फ्रूट आपका बनता है. नेक्स्ट इज द स्टेम. स्टेम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. स्टेम क्या करता है? दैट इज यूज टू it is used to transfer the water and minerals to the different parts of the plant. ठीक है. आगे जब आप चैप्टर में जाओगे तो आप दो तरह के प्लांट वेसल्स भी पढ़ोगे, दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम. वो आगे के चैप्टर में हायर क्लासेस में आपको मिलेगा. देन वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट लीफ. नाउ दिस लीफ इज ऑल्सो नोन एज द किचन. लीफ इज ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ प्लांट. होता है ना. देयर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. यस, प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? व्हाट प्लांट डूज? फोटोसिंथेसिस से प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं. लाइक दे इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, minerals from the rocks, sunlight, chlorophyll is present in the leaf, and हमें as a product में क्या मिलता है? What oxygen and energy, right? So ये आपने एक पढ़ा. Now the next thing is, यहाँ पर आप एक देख रहे होगे node and internode. node and internode है. node का मतलब क्या होता है? स्टेम्स में जहाँ पर आप देखोगे ना कि ये जो ज्वाइनिंग पार्ट है between, wait, let me zoom it first, this one, see here, इसको देखिए. ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्रांच यहाँ से निकला है, एंड दिस इज द स्टेम, और ये एक ज्वाइनिंग है. दिस इज द नोड फ्रॉम वेयर द ब्रांच गेट इरप्टेड. ठीक है. सो दैट वी कॉल्ड एज नोड. नेक्स्ट इज इंटरनोड. नेक्स्ट इज इंटरनोड, दैट इज इन बिटवीन द स्टेम्स. आप देखोगे. ठीक है. So moving further to the chapter, here you are seeing the birds from where the leaves originates, right? And now the very important thing, the primary root, secondary root, है ना. रूट सिस्टम हम इन्हें बोलते हैं. बाद में इन्हीं से आपको पढ़ना होगा. दैट आर टैप रूट आप पढ़ोगे, फाइब्रस रूट आप पढ़ोगे, इसी से. ठीक है. यही कॉन्सेप्ट आगे जाएगा. बट
When we talk about the primary root and the secondary root students, then we see here कि आप देख सकते हो जो ये सॉइल है, सॉइल के ठीक नीचे से जो इरप्ट हुआ है ना, दैट इज योर प्राइमरी रूट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्राइमरी, ये जो प्राइमरी रूट है ना, इससे जो रूट आपका निकलेगा दैट इज द सेकेंडरी रूट. और फिर अगर इससे कोई रूट निकलता दैट विल बी द टर्शरी रूट. ठीक है, वो आपका टर्शरी रूट हो जाता. Now, one more thing, one very important thing. यहाँ पे एक mentioned है different edible parts of plant. इसका मतलब क्या है? We as human beings eat each and every part of plant. आप जो भी देख रहे हो, आप हर चीज खाते हो. आप हर एक प्लांट का लीफ भी खाते हैं हम लोग. फ्रूट्स, जो वेजिटेबल इज अ फ्रूट ऑल्सो ना, फ्रूट ही है. रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं, लीफ खाते हैं, तो हर एक चीज हम खा रहे हैं. दैट्स वाई ये फोटो में दिया हुआ है डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट. ओके, नाउ मूविंग टू द फर्दर द चैप्टर. Here we are seeing a term that is nectar. Can see nectar. Nectar is a term. Now bees collect nectar from flowers and and then convert it into honey and store it in their hive. वो स्टोर करते हैं उसको. ठीक है, अब उसको हम लोग, आप एक वर्ड पढ़े होंगे, एक वर्ड आप लोगों को जान लेना चाहिए. द वर्ड इज प्रोबोसिस. प्रोबोसिस. नाउ ये जो वर्ड है, व्हाट इज प्रोबोसिस? प्रोबोसिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. जैसे कि मॉस्किटोज में, बीज में, बटरफ्लाइज में एक ट्यूब लाइक उनका माउथ होता है जिससे वो ब्लड को, जैसे मॉस्किटो ब्लड को, हनी बीज जो है वो नेक्टर को सक करते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी हाइव में वो स्टोर करते हैं और वहां से हमें हनी मिलता है. राइट. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर इज दिस स्प्राउटेड. आप देख रहे होगे, है ना, होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट. मूंग दाल को जब हम भिगा कर रखते हैं, देन आफ्टर सम डेज, 1 to 2 days, वो क्या होता है कि छोटे छोटे स्प्राउट्स उसमें से, छोटे से प्लांट्स उसमें से निकलने लग जाते हैं, जिसको हम लोग इन हिंदी जिसे लाइक अंकुरित हो जाना. राइट. तो दैट इज वेरी हेल्दियर, बहुत हेल्दी रहता है. Now, moving next to the chapter, here is what do animal eat? What do animal eat? Now, this category, herbivore, carnivores, and omnivores. ये जो category है ना, when we see here, so animals are basically categorized into 3 types. The first one is herbivore. Okay, the second one is carnivore. The third one is omnivores. Right. When we talk about this, herbivores, carnivores, omnivores, herbivores are those kind of animals which eat who eats only plant, like spinach, grass, जो plant related चीजें खाते हैं. There are some animals who eat other animals that are known as carnivores, and some animals are there who eat both carnivores, who eats both animal and plant, तो उनको हम omnivores बोलते हैं. तो बेसिकली एनिमल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, omnivores. ना मूविंग नेक्स्ट. हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो जितने भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, आप देखोगे कि उसके लास्ट में देयर आर सम कीवर्ड्स, एंड दीज कीवर्ड्स आर बेसिकली द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स of the above chapter. That's why these are given at the last of the chapter. Like, as I explained all these keywords, right? I have explained what are ingredients, what are the edible parts of the plant, what is nectar, what is sprouted seed, herbivore, carnivore, omnivores, all these I have explained. So these are the important things.
बेसिकली क्या होता है ना, जब हम एनसीईआरटी पढ़ने जाते हैं तो एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारा ऐसा लाइन है जो इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है कि उनसे एक स्टोरी है, बट उनसे एक कंटेंट निकल कर आता है, एंड दैट कंटेंट इज दिस वन। तो इसीलिए कीवर्ड्स जो है, जैसे कि आपको बहुत इसमें कमांड होना चाहिए, what are ingredients, what do you mean by edible parts, what is nectar, what is this sprouted seed, what is herbivores, carnivores, omnivores, ये आपको पता होना चाहिए. Okay, now there are some questions, and yes, please go through this summary portion also. Like the first point, there is a lot of variation in the food eaten in different regions of India. Of course there are variations. इंडिया बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है. बोला जाता है ना कि इंडिया में हर 2-3 किलोमीटर पे भाषा बदल जाता है, हर दो कुछ किलोमीटर पे खाना बदल जाता है. इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया के हर एक रीजन में अलग अलग टेस्ट आपको मिलेगा. नाउ द सेकंड इज द मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट एंड एनिमल. ऑफ कोर्स जो मेन सोर्सेज है फूड का वो क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल, यही तो दो सोर्स है ना. जो भी चीज हम खाते हैं या तो हमें वो प्लांट से मिल रहा है या तो हमें वो एनिमल से मिल रहा है. द नेक्स्ट इज एनिमल विच ईट प्लांट आर कॉल्ड herbivores. Yes, I have explained it. The next is animal which eat only animals are called carnivores, like the tiger, lion. The last one is animal which eat both plant as well as other animal are called omnivores. Yes, these are omnivores, like dog, yes, like us humans. Okay, so you can learn this, or these are very simple things. जब हम जैसे जैसे बुक में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये और टफ होगा, तब ज़्यादा मजा आएगा. अभी तो बेसिक चीज़ें थी, फर्स्ट चैप्टर था, एंड यस ऑफ कोर्स फर्स्ट डे था हमारे जर्नी की शुरुआत का. यस, योर टुडे होमवर्क इज, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आपका होमवर्क है, यू हैव टू गो थ्रू दीज थिंग्स. अगर कुछ नहीं समझ में आए यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. नाउ always study the एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी बुक बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो एनसीईआरटी बुक से ही होता है. एंड लेटर ऑन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे, जैसे भी कुछ दिन में पीटीटी का वीडियो भी आएगा, उसमें भी साइंस आपको पढ़ना होता है, उसमें भी एनसीईआरटी ही रहता है. इसीलिए एनसीईआरटी पर अपना पकड़ को बनाए रखिए. नाउ वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ यू like the way of my explanation, then please subscribe, like, comment, and of course share this video. And tomorrow we will be with the next chapter of the class 6 science. Thank you for watching, students.